ICS कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल और ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल दोनों प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये केसी डिक्टेशन है बच्चों, ये 100+ डिक्टेशन बोली जा रही हैं। इससे पीछे की आपको डिक्टेशन लिखनी है और टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जाननी है। कम स्पीड में, जैसे 80 की स्पीड से लिखनी है या उससे भी कम आपकी स्पीड है, एज ए बिगनर हो, अभी बुक ख़त्म की है, तो उसमें जो है जो वेबसाइट हम देते हैं ऐप के माध्यम से, ICS कोचिंग सेंटर ऐप है, इस नंबर पे जैसे आप व्हाट्सएप करोगे ऐप का लिंक आ जाता है, तो वहाँ से जैसे मतलब यही आप जो है इसको परचेज़ करके वो वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हो और वहाँ पर जो है अपनी डिक्टेशंस लिख करके वहाँ टाइप कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी जान सकते हो। इस ऐप के द्वारा जो ये हम जो आपको सब्सक्रिप्शन में जो चीज़ें देते हैं उसमें हम सारे कोर्सेज देते हैं, आपको बेसिक देते हैं, उसमें डिक्टेशंस देते हैं, स्टार्टिंग की डिक्टेशंस होती हैं, उसके बाद स्पीड 80 की होती है, 100 की अभी चल ही रही हैं आपके सामने। तो ये सारी डिक्टेशंस जो है उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। जितने भी टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो सभी सॉफ्टवेयर उसमें अवेलेबल हैं और जो है सभी सॉफ्टवेयर पर आप 24 आवर्स किसी भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हो। तो जिस भी बच्चे को जैसे डिक्टेशन है जो मैं बोलता हूँ ये लिख करके टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जाननी है, और जो है डेली अगर आप जैसे मेरे साथ जो मैं डेली 7:30 पे क्लास रहती है, अभी स्टार्ट की हमने, तो ये 7:30 पे जैसे आप डेली आप इसको लिखोगे, ये पहले से ही वेबसाइट पे लगी हुई है, आप वहाँ जा कर के जैसे मतलब क्या कहते हैं अभी सुन के पहले लिखिए, लिख करके फिर वहाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करोगे तो एक्यूरेसी आएगी, अगले दिन मैं यहाँ पर आपका रिजल्ट पढ़ दूँगा, ठीक है। तो आज मैंने चेक किया किसी ने भी टाइप नहीं कर रखी थी तो इसलिए रिजल्ट नहीं पड़ा है। अभी 8 बजे जिन बच्चों ने जैसे एडमिशन ले रखा है वो 8 बजे जो है तैयार रहेंगे, उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आपको जो है ये कैलाश चंद्र डिक्टेशन नंबर 256, डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Sir, this bill tries to give capital punishment for food offences. My experience of the working of the rationing laws in my state has been that the majority of the people who are arrested and convicted for these offences are poor people who carry small quantities of grains from one place to another for their own living, and these people are put in prison and harassed. I have not yet known of any large number of really big merchants who are really responsible for the black market in these food grains being brought to book. This bill which we are passing and which the punishment has been raised to 3 years and in which it has also been provided that the carriers by means of which this smuggling takes place should also be forfeited will not achieve the desired result. I very much doubt if many trucks and other big vehicles will be confiscated. What will really happen is that many bullock carts of the Kisans will be confiscated and they will be harassed. That is my practical experience from the interior of the Gorakhpur district, where lies the border between UP and Bihar, and where I find many people carrying small quantities of grains for feeding their starving families. Therefore, I am at a loss to know what to do, whether to support this bill or not. The purpose is laudable, but I know from experience that it will not stop black market because the source at which the black market begins is not affected by this bill. I would not be exaggerating if I say that if every supply officer in whose area black market is found to exist were held responsible for it and were given deterrent punishment, the black market would stop. But by catching small people
and giving them deterrent punishment, I do not think you will be really solving this problem. I would have in fact suggested that nobody who is found carrying small amount of grains, say up to 20 kg for consumption, should be punished under this new law. That would at least save the people who commit these offences mostly out of ignorance and sometimes out of dire necessity. But the bill will really be used against them in order to show that the number of convictions for food offences are so great which could never be imagined. I really warn the government that they will not be stopping the black market by raising the punishment to 3 years. There must be some method by which they can attack the black market at the root by purifying their own control department, which is charged with the duty of enforcing the food laws, and unless they become more honest and deterrent punishments are given to them for dishonesty, I do not think that this bill will be very helpful. Sir, I was the president during the year before last of the Rationing Employees Union in UP. All the rationing employees in UP were members of the union and they had their grievances about pay and other things. From direct knowledge, therefore, I can say that a premium is put on dishonesty in this department. Generally, a corrupt officer wants his subordinates to be corrupt. Honest subordinates find it difficult to carry on and are very often dismissed as incompetent or are victimized on false charges. Dishonest subordinates are seldom caught as they act in collusion with dishonest officers. Even if they are ever dismissed, they have already collected enough to fall back upon. There were cases where people who were dismissed had already earned several thousand and sometimes even lakhs. Unless strong measures are taken that everybody who is enrolled in the supply department will have to give an inventory of all his assets, and if and when he leaves that department and at intervals his assets will be checked to see that he has not made illegal gains, I do not think you can really control the black market. Unless you have a service which is honest, which is really inspired by the ideal of administering these food laws with honesty, you cannot really eradicate the black market. We all know that the problem of food and its conservation is all important. We also know that our national plans could not be implemented because of our having to import 500 crores of rupees worth of food grains from outside. In fact, we have been promised that in 2010 we will not import food grains. The only thing possible, therefore, is that we must become self-sufficient during this period, and for this purpose, more than anything else, there should be scientific rationing all over the country. Things should be so ordered that no food is wasted and nobody is deprived of the required quantity. In our country, the position is such that many members of the House have confessed that they live on food got from the black market. तो स्पीड वही रही है लगभग 110 के आसपास. ऑनलाइन फीस सर, पुलिस का पेपर लीक हो चुका है, आप उसके बारे में कुछ बताएं. नहीं, उसके बारे में तो मैं क्या बताऊंगा. उसके बारे में तो जो है, जैसे मैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बातें बता सकता हूँ या टाइपिंग से रिलेटेड.
भी शॉर्ट हैंड और जो टाइपिंग के टेस्ट होते हैं। या फीस कितनी है? फीस जो है इसकी 2500 रुपये है साल भर की। इसमें ऐप की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है, और जो वेबसाइट है, जो ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आपको जैसे टाइप करना है, जैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है, जो भी टेस्ट देने हैं, उसकी फ़ीस जो है मतलब उसके साथ जो वो मिलता है जो आपको, उसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा आपको 120 की स्पीड से। तो ICS इंग्लिश डिक्टेशन के नाम से फोल्डर है माई कोर्सेज में। वेबसाइट जो आपके पास लिंक है, लिंक नहीं है तो पहले तो ऐप का भी लिंक है, इसी से दोनों लिंक आ जाते हैं, ऐप का भी और वेबसाइट का भी। वेबसाइट का एक्सेस जो है जो बच्चा परचेज कर लेता है ऐप को, उसको जैसे दिया जाता है, तो इस नंबर पे जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे और जो है क्या कहते हैं, आपको वहाँ से सारी लिंक दिख जाएंगे। और जो है इसमें ना डेली आप जो है डेली एक डिक्टेशन जरूर लिखा करो बच्चों, जो भी जैसे आप जिस पोस्ट पे भी हो। जैसे जो बच्चे ग्रुप डी में लग जाते हैं, ग्रेड डी में अपना, तो वो जैसे अपने अपने डिपार्टमेंटली 3 साल बाद 5 साल बाद जो आपके टेस्ट होते हैं, मतलब 3 साल के बाद जैसे आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आप डेली जैसे एक डिक्टेशन लिखोगे तो वहाँ पर जैसे मतलब भी आपको ये बेनिफिट करेगी, और जो है आपको मतलब क्या कहते हैं रेगुलरिटी इसमें रहेगी। और जैसे कोई विधानसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का रिपोर्टरों की जो वैकेंसी आती है, जो सबसे बड़ा सपना होता है, तो वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो जैसे डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, जिससे आप जो है उस मुकाम तक पहुँच पाएँ। इस क्लास के अंदर इतना है बच्चों। नमस्कार बच्चों।